Okay, so this is a question. Clearly बोला है, prepare a common size financial statement in vertical form. ठीक है, vertical form is the new form, the new format. Fine. P&L account is given for 2017-18. Okay, I purposely took up a sum of common size which has two columns. Generally, common size sums have only 1 year. एक ही साल वाला होता है. I purposely took up this. Okay, a 2 year. Okay, so ऐसा कुछ नहीं है कि 1 year का ही आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कोई clause नहीं है कहीं पे. ठीक है, 2 years का भी आ सकता है. Obviously, कुछ नहीं, सिर्फ एक column extra बन जाएगा. That's it. Okay. So 2017-18 ये common size है. Same sum can be asked for comparative also because comparative में तो there has to be only 2 years. Correct? समझ में आ रहा है whatever I'm saying? Okay. So don't be in that mindset कि oh common size means only 1 year का what do you call it? 1 year का column will be there. I have seen students mugging up like this. Okay? कि trend analysis मतलब 2 से ज़्यादा column आएगा. What do you call it? Comparative में सिर्फ 2 ही columns आएगा. And what do you call common size में सिर्फ 1 ही column आएगा. So people, I mean there are students who remember things like that. This is not to be mugged up. ऐसा कोई mugging up मत करो आप लोग. समझ में आया ना? हाँ, trend analysis में logic is that there are multiple columns because when I'm talking about trend, so it cannot be less than 3 years. I have to see the trend, right? Right? Okay. Trend matlab what to follow it. That is why we called it trend analysis. Okay. So first 3 years ka dekho ya first 5 years ka dekho ya first 4 years ka dekho. That is why in all the trend analysis sums you will see there are multiple years given in the question. Okay. Then when I come to comparative, obviously there has to be only 2 column in comparative. Why? Because when I'm comparing, I can compare only 2 things. I cannot compare 4-5 things, multiple things. It has to be only 2 things which I can compare. That is why in comparative there are only 2 years given. Whereas in common size का ऐसा कोई breakthrough नहीं है कि एक ही साल का common size हो सकता है. No, you can have more than 1 year का common size also. Only the number of columns when you are solving will increase. Okay, am I clear about this? समझ में आया? Okay, yeah, Kishmat, I will be giving the theory of management accounting. Yeah, but theory as in बच्चा theory तो इसमें खास नहीं है इतना. ये जो हम sums करते हैं इसी का हम MCQs आपको पूछते हैं. Okay, तो ऐसा कोई hard and fast theory नहीं है. ठीक है, but जितना होगा वो उतना मैं आपको दे दूंगी. Sums ही जो होता है ना उसी को हम आपको MCQ स्टाइल में पूछते हैं. ये जो sums है तो बड़े बड़े sums है for 15 marks. But the same sums like for logic, testing your logic, testing your concepts, we can ask the same sum for 1 mark or 2. Okay, I'll give you an example. I can give you a list of say current assets. Ka list I can give you, and in MCQ I can ask you, put a tick mark to the quick assets. So मैं आपको लिस्ट में करंट एसेट्स दूंगी. करंट एसेट्स में क्विक एसेट्स नॉन क्विक दोनों आता है. तो मैं क्या करूंगी, 3 नॉन क्विक दूंगी, उसमें से एक क्विक एसेट होगा. समझ में आया? हाँ, तो आपको बस जो क्विक एसेट है उसी को टिक करना है. या मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ. आई कैन गिव यू 3 क्विक and 1 नॉन क्विक and I can tell you tick mark the what do you call the non quick asset. Am I clear, Kishmat? Okay, so opening stock, let me do this. Opening stock कहाँ जाएगा? Anyone? In revenue statement, where will opening stock go? When it is opening stock, it means opening stock of finished goods, without by default. Yeah, very good, Kishmat. Yeah, Anu. Yeah, very good. Yeah, COGS, absolutely correct. Yeah, so this will go under the heading of COGS. Good. Opening stock, purchases and wages. ये तीनों के तीनों जाएंगे under the heading COGS.
इसमें और एक आइटम जाएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. दिस विल आल्सो गो इन COGS. Clear? Okay, fine. Sales is the first item of revenue statements. Revenue statement starts with income, that is sales, and then you subtract all your cost, and then you get ultimately your profits. ठीक है? फिर ये admin expenses, selling expenses, finance expenses, this all will go under the heading operating expense. Okay, then provision for tax, NPAT, what do you call it? Sorry, NPBT, net profit before tax के बाद less provision for taxes or tax paid, and then you get net profit after tax. ये वो वाला item है, ठीक है? Then next dividend. Dividend तो appropriations में आता है, okay? Appropriations मतलब पैसा side में करना है ना? You paid out of profits, right? After paying taxes, after paying income tax, जो tax बच गया, that is net profit after tax. उसके बाद you keep the dividend money aside for the shareholders. समझ में आया? Okay. Then retained earnings. Retained earnings मतलब net profit. Okay, simple as that. Retained earnings मतलब net profit. Okay. Then I have non-operating income. Income है तो मेरा income revenue statement में add हो जाएगा because it's a income to me. ठीक है? Now one thing students, exam में how will you come to know your answer is right? So when we make the vertical revenue statement, आपका ये last में answer आना चाहिए. दिख रहा है? Retained earnings, this is net profit. 61,000 and 65,000. तो जो अब हम sum करेंगे तो हमारा ये final answer आना चाहिए 61 and 65. See, what did I tell you? Whether you do sums with the old style of revenue, what you call it, the old style of P&L, ये old style है जो question में दिया है, the H format, okay, horizontal format जिसको हम बोलते हैं, okay, ये क्या है? This is my revenue statement in the old style, ledger form. और ये जो है ये बिना ledger form का है. This is without ledger form. Okay, this is the new style of revenue statement और P&L account. ठीक है? So start. I hope the question is clear to everyone. समझ में आया? Just acknowledge it in the chat box. Okay, fine. Yeah. Yeah. Thanks, Anu. Thanks, Rohan. Pankaj. Yeah, Ravi. Ravish. Okay. Thanks. Okay. So, Ruchi. Yeah. Thanks, dear. Start. Write down vertical common size revenue statement for the year ended 31st December 2017 and 18. Okay. Yeah. Particulars column 2017 percentage column, we will calculate the common size percentage, right? Yeah, 2018 और उसके बाजू में common size percentage column. ठीक है? Okay, simultaneously complete करो. Yeah. Sales 8 lakhs and 10 lakhs. Then COGS, yeah, you have to show the bifurcation. Yes. Yeah. Cost of goods sold, opening stock of finished goods, add purchases, add wages, less closing stock of finished goods. ठीक है? ये कुछ नहीं है, आपने लास्ट ईयर FI Bcom में मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स किया है ना? या ये बस वही है, हम वहाँ लेजर में लिखते थे, यहाँ विदाउट लेजर हम उसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं. दैट्स इट. ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहाँ आता था? ट्रेडिंग में आता था, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड. Purchases, wages, ये कहाँ आता था? Manufacturing account debit side. Okay, yeah. Opening stock of raw material, closing stock of raw material, सब कहाँ आता था? Manufacturing debit, manufacturing credit respectively. Opening stock of WIP, manufacturing debit, closing stock of WIP, manufacturing credit. Okay, yeah, like this. Any factory related expenses, any expenses which you do in factory, okay, that comes to manufacturing account debit side. Okay, बस ये वही है, इसी को COGS बोलते हैं. Okay.
बराबर ना. और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, तो व्हाट इज द बैलेंस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द बैलेंसिंग फिगर. And when we make trading account, what is the balancing figure? Gross profit. To see sales minus COGS, we get gross profit. So it is one and the same thing. Okay, just वो एक लेजर में बनता है, ये लेजर में नहीं बनता है, बस फर्क उतना है, इसलिए आंसर चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, फाइन. सो कंप्लीटेड फॉर 2017 के लिए पहले कंप्लीट करो. 40,000, 4,95,000, 1,25,000 and 60. ठीक है, लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट. ये सब माइनस करना है, माइनस है, COGSC लेस COGS. सो 8 lakhs माइनस 40,000 माइनस 4,95,000 माइनस 1,20,000. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसको मुझे अलग से लिखना पड़ेगा. वेट वेट वेट, जस्ट अ मिनट. COGS आई एम कैलकुलेटिंग. हाँ बच्चा, ये देखो COGS ये रहा. और 40,000 या प्लस 4,95,000 plus 1,25,000 wages minus 60,000. Okay, so 6 lakhs is my COGS. Yeah, students, please pay attention. Yeah, COGS first calculate separately. The 40,000 of opening stock, add 4,95,000 of purchases, add wages 1,25,000, and what do you call it? Less closing stock 60,000. So my answer is 6 lakhs. So see, I'm going to write here. Okay. What is the problem? So I'll be totaling this as well as this one also. Okay, साथ साथ में करो. Okay, so this answer how much I got? 6 lakhs. COGS. Same way calculate for this. 60,000 plus 6,20,000 plus 2 lakhs of wages minus 80,000. So 8 lakhs. Okay, so this is COGS का total. Okay, don't forget ये COGS है. अब माइनस करो. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. Sales minus gross COGS is gross profit. So 8 lakhs minus 6 lakhs, 2 lakhs. So my gross profit is 2 lakhs. Okay. Next, ये वाला भी 10 lakhs sales minus COGS 8 lakhs. Coincidentally same answer आया. So my gross profit for both the years is 2 lakhs. Okay. Like this. Then subtract your admin expenses, selling expenses and financial expenses. ऑपरेटिंग अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, सो देखो मैंने उसको ब्रैकेट में डाला हुआ है. सो 2 lakhs माइनस 2 lakhs माइनस 50,000 एंड 25, टोटल कितना हुआ 75. तो 2 lakh माइनस 75,000, 1,25,000. सो राइट हियर 1,25,000. Next, 2018, 2 lakhs minus
60, 30 and 10. 60 plus 30 is 90. 90 plus 10 is 1 lakh. तो 2 lakhs minus 1 lakh कितना होता है? 1 lakh. So if you can do it orally, well and good. नहीं तो कैलसी तो है ही अपने पास. Okay. So 1 lakh. Fine. So this is known as net profit before interest and taxes. With less interest. आई नो इंटरेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज लेकिन स्टेप ओमिट नहीं करना है. यू हैव टू शो इट बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप यू नो व्हाट यू कॉल व्हेन यू सी अ रेवेन्यू स्टेटमेंट, अगर कभी आपने ध्यान से देखा है तो किसी बिजनेस मैगजीन में या पेपर्स में आता है, न्यूज पेपर्स में, तो आप देखोगे वो लोग इंटरेस्ट अलग से दिखाते हैं. ओके या अब इस सब में नहीं है तो ठीक है, पूरा डैश, अदरवाइज अलग से इंटरेस्ट दिखाते हैं. ओके जैसे अगर कंपनी ने कोई बैंक लोन लिया है, ओके तो अलग से दिखाते हैं कि दैट इंटरेस्ट इज पेड. ओके इससे क्या होता है, द शेयर होल्डर्स ओके गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंपनी. ओके दैट इज द रीजन. सो इंटरेस्ट कैन बी शोन अंडर फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑल्सो. सी ये कैटेगरी दिख रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या योर इंटरेस्ट. Sometimes I mean in some textbooks they show interest under financial expenses. Okay ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि wrong है because interest is a financial expense. Okay but for the purpose of management accounting we don't treat interest as a financial expense, we show it separately. Okay under this heading. Okay? So interest नहीं है तो same answer आएगा, right? 1,25,000 same and 1 lakh. ठीक है. So this is called as net profit after interest but before tax. अब interest हमने pay कर दिया मतलब minus करके, तो net profit after interest but before tax. Then less non-operating expense, not there in the question. Add non-operating income, yes it is there in the question, 10,000 and 50,000. So 1,25,000 plus 10,000 is how much? 1,35,000. Next column 1 lakh plus 50 is 1,50,000. Okay, so this is called as net profit before taxes. Less provision for tax or tax paid. चलो पे करते हैं. 1,35,000 minus 40,000 of my tax, so 95,000. Sorry 54. I'm so sorry. Yeah, sorry. 1,35,000 minus 54,000 is my tax. 81,000. So my net profit after tax NPAT is 81,000. ठीक है. नेक्स्ट 1,50,000 minus 60,000 90,000. एनीवेज डबल चेक कर लेते हैं. 1,50,000 minus 60, yeah it's 90,000. So right here 90. ठीक है. एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. अगर लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली ये साल वो ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना. अगर लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट 100 रुपया था, ये ईयर मेरा नेट प्रॉफिट आई मीन दिस ईयर माई नेट प्रॉफिट इज 200. सो पिछले साल का 100 रुपया भी उसमें ऐड होगा, तो 200 प्लस 100 ऑफ लास्ट ईयर इट विल मेक 300. समझ में आ रहा है? Acknowledge it in the chat box. Are you guys understanding all this? Yeah, thanks Ravish, Vraj, Pankaj, Prachi, Harshita. Yeah, thank you dear. Divya, Preeti, okay, Rahul, thanks. ठीक है. ओके तो इस सब में ओपनिंग बैलेंस नहीं है. फाइन, पूरा डैश होगा तो ऐड कर देना, सिंपल. लेस अप्रोप्रिएशंस. व्हाट आर अप्रोप्रिएशंस? रिजर्व्स. ठीक है. तो आप
का प्रॉफिट 81,000 है, बट ये आपका रियल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी आपको इसमें से डिविडेंड भी देना है शेयर होल्डर्स को. समझ में आ रहा है? या सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 81,000. वंस यू पे योर टैक्सेस, देन ओनली यू कैन give dividend to the shareholders. Without paying taxes, you cannot give dividend to the shareholders as per the Companies Act. Clear? Yeah. Neha and Vraj, don't write the attendance in the chat box, dear. अभी जब मैं chat box public to all करूँगी, for everyone करूँगी, तब करना. समझ में आया? Okay? Don't do it right now. Now it is private to the host only. So don't give it right now. ठीक है? जब मैं बोलूँगी तब. Less appropriations, dividend देना है 20,000 and 25,000. So 81,000 minus 20,000 is how much? 61,000. Okay, and 90,000 minus 25,000. 65,000. So right here. See, check करो अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है. ऑब्वियसली राइट है, अभी मैंने आपको दिखाया था. या सी रिटेन्ड अर्निंग्स दिखा. Retained earnings 65,000 and 61 and 65. So that is what we have also got. Retained earnings 61 and 65. Okay. Now you people give your attendance in the chat box. अब मैंने उसको public किया, ठीक है, for everyone. Now give it in the chat box, and yes, ध्यान देना screen पे भी, because I am going to do the percentage column. ठीक है? अभी एक note लिखो. Write a note. For common size revenue statements, for common size revenue statements, मतलब P&L. Sales, don't forget sales. I've highlighted it. Sales is considered as the base and base is equal to 100. That means we have to assume sales is equal to 100. Okay, don't forget this. For balance sheet purpose, we assume sources of funds and application of funds ka total to be 100 in common size. Okay, and in revenue statements, we assume sales, because sales is the base. Everything what you are doing, every expenses which you are incurring is why, so that we get revenue. Okay, so iske liye sales is the base. Okay. Fine. फिर मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया था, याद है, कैलसी पे. यस, तो अब हम वो भी यूज करेंगे शॉर्टकट को. तो इस शॉर्टकट में क्या है, मेरा सेल्स कॉमन रहने वाला है, तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगी? या एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, डोंट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, डोंट फॉरगेट. तो देखो, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ परसेंटेज कॉलम में. 2017 के परसेंटेज कॉलम में आई एम राइटिंग. Okay, so how will I calculate my percentage, dear? See, I'm writing it down. Yeah. Percentage is equal to your expense divided, expense will be in the numerator, upon sales
Sales मतलब net sales, huh? Yeah, it is always net sales into 100. Okay, so how will you calculate the percentage? Expense upon net sales into 100. Okay, same way, same for 2018 also. Expense upon net sales into 100. इनकम भी हो सकता है, जैसे न्यूमरेटर में मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो भी ऑब्वियसली आपको लेना है. तो देन जस्ट मेक इट क्लियर, एक्सपेंस और इनकम, या व्हिच व्हाटएवर इज देयर, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, फाइन. सो याद है ना शॉर्टकट मेथड, तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, बिलो दिस आई एम राइटिंग द शॉर्टकट. So what shortcut are you going to use? 1 upon, for which column? I'm talking about 2017. मेरा सेल्स कितना है? 8 lakhs. Okay, equal to sign and multiplication sign 2 times. ठीक है, I repeat, 1 upon 8 lakhs. Just write, let me write it better. Yeah, so 1 upon 8 lakhs into 100. Okay, equal to sign and multiplication sign 2 times. ठीक है, और जब हम 2018 के लिए करेंगे तो 1 अपॉन व्हाट इज द बेस देयर, वहाँ नेट सेल्स कितना है? 10 lakhs. सो 1 अपॉन 10 lakhs into 100 इक्वल टू साइन एंड मल्टीप्लीकेशन साइन 2 times. ओके, ये मत भूलना. या एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, so that जब आप रिविजन करोगे तो यू शुड नो व्हाट मैम हैज डन. ओके, सो या स्टार्ट. Just a minute, I need my calculator. 1 minute, just give me a few seconds. Yeah. So on calci, take 1 divided by 8 lakhs into 100 equal to sign multiplication sign 2 times, and then I need answer for this na, 4 lakhs. So, sorry, 40. So type 40,000 as equal to. So my answer is 5%. समझ में आ रहा है ना? ये तो 100 ही रहेगा. Next time want answer for this 4,95,000. So type 4,95,000 press equal to 61.875. So I can make it 61.88. Okay. Next I want answer 1,25,000. Type 1,25,000 press equal to 15.625. Okay. So 15.63. Okay. Next I want answer for 60,000. Type 60,000 press equal to, so it is 7.5. Okay, then type 6 lakhs, press equal to, so my answer is 75. समझ में आ रहा है? Acknowledge it in the chat box. Are you guys understanding? Okay, तो इससे क्या होगा, आपका rework कम हो जाएगा. Okay, जो आपको घड़ी घड़ी टाइप करना पड़ता है ना, वो rework will be lesser. Okay, Vijay did not understand. Okay. Oh, we just have very few seconds left. ठीक है, next lecture I'll do the same students. ठीक है, next lecture obviously ये column हमको complete करना है. We have to complete the percentage column. Okay, so Vijay, next lecture I will explain it. Otherwise जो मैंने YouTube पे videos upload किया, वहाँ भी lectures में मैंने explain किया है ये step. Okay, so you if you want you can refer that. Okay.
अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस एंड दैट टाइम आई विल टेक इट. ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब समझ में आएगा. ओके